Hello students. So we have successfully completed the gravitational chapter in the previous classes. So in the today's class we will discuss another new topic, that is your properties of bulk matter, in which we study the property of a solid body, then come to your liquid, etc. So let's start today's class. So here is the heading, that is properties of bulk matter. So bulk matter means that is which have a definite shape, volume, and which have something mass, massive. That is your bulk matter. So before going to the properties of bulk matter, so first we have to know what is matter. So what is matter means the anything which possesses mass and occupies space is called matter. So what is say that anything which possesses mass and occupies some space, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବଡି ହେଇଥିବ ଯାହାର ମାସ୍ ଥିବ ମାନେ ଓଜନ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ବା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବ। ତ we found the formula that anything which possesses mass and occupies space is called matter. So it may be three types, that is your solid, liquid and gas. So it is of three types, that is your solid, liquid and gas. So next, what is solid? I think in your previous classes, that is your 10th level or 9th level, you have studied well that what is solid, what is liquid and what is gas. So here is a brief description, that is it is that type of matter which has definite shape and definite volume. So we said that solid is that which has definite shape and definite volume. ताले solid आमे कहा को कहिलु जार definite shape आउ definite volume थाए, जार गोटे तुमर निर्दिष्ट आकार आउ तार वॉल्यूम थाए, ताकू कहला तुमर सॉलिड। एग्जांपल आकार वी कैन से दैट इट इज अ टेबल, आयरन, टीवी, डस्टर, चॉक, इटीसी। देन कम टू लिक्विड। व्हाट इज लिक्विड? It is that type of matter which has definite volume but not definite shape. So what is liquid? Definite volume but not definite shape. ताले कौन था यार, वॉल्यूम टा पर्टिकुलर थिबो, निर्दिष्ट थिबो, बट तार शेप टा निर्दिष्ट न थाए। तुम जानिच जे लिक्विड टा कौन करे ना, जो तार कौनसी आकार न थाए, जो जगह आम ताकू नौ से सही जगार आकार नहीं निए। जमती तुम गोटे ग्लास रे पानी ढाल ताले से पानीटा को भाया ग्लास शेप रहीगला। ताले इफ we pour water in a glass, then it converted to the shape of glass. So it so it is said that it has not definite shape but definite volume. आमे 1 लिटर नेचु माने से 1 लिटर थिबो, बट कोन हबो आमे जो कंटेनर रे नबा सेही कंटेनर से शेप नै नबो, तार निर्दिष्ट कोनोसी शेप न थाए। बुझियला? ताले हला कोन तापर नेक्स्ट गैस। It is that type of matter which has neither definite shape nor definite volume. The gas is that जार निर्दिष्ट वॉल्यूम भी न थाए और निर्दिष्ट आकार भी न थाए। एग्जांपल H2, CO2, etc. Then next come to the heading elasticity. I think you are very well acquainted with this word elasticity and use this word regularly in your daily life. What is elasticity? As you know, you are using this word with this rubber band, spring, that is their elastic body. So before saying rubber or spring is a elastic body, so first we have to know what is elasticity. The property by virtue of which a body tends to recover its original configuration on the removal of the deforming force is called elasticity. ताले elastic body कहा को कहिलु आमे, जदि आमे धर गोटे रबर नेलु, ताले रबरटा को कौन कलु आमे टाणिलु, ताले रबरटा धर एतिकी लंबा थिला, आमे ताको टाणिकी एतिकी लंबा करिदेलु। बुझिला? ताले जदि ताकू आमे से रबर ऊपर कौन कलु, गोटे फोर्स अप्लाई कलु कि नै, जहा फल से लंबा हैला। जदि से फोर्सटा आमे आथरे रिमूव करि नबा, रिमूव करदेले कौन हम, सी आथे तार ओरिजिनल कन्फिगरेशन पळै आसीबो। सेई जो ओरिजिनल कन्फिगरेशन को पळै आसिला, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଡି।
as its regain its original configuration, so it is called elastic body, or this property is called your elasticity. That's why you called rubber band is your elasticity. Got it? So next point is that the body which show elastic property are called elastic bodies. তাহলে जो body তোমার elastic property show করা তাকে তাহলে কোন কুহাଯିବ elastic body. Then next point, the body which do not show the tendency to recover their original configuration on the removal of deforming forces, that is one deform they stay deform, are called not elastic body. এটি তোমার হয়ে যাব non elastic body ହେଲା। তাহলে এটা কোন হবো নন ইলাস্টিক বডি। তাহলে কোন পইলা এটি পয়েন্ট, जो বডি তোমার ইলাস্টিক প্রপার্টি শো করিব নাই, the body which does not possesses the elastic property is called your non elastic। तार अल्टाटा हो इलास्टिक माने जदि आम गोटे कौन धर एग्जांपल आकार नहीं पार तुम कादुओ, ताले कादुओटा अच्छी ये तुम तापर फोर्स अप्लाई कल बा जो भाया तुम ताको आकार देवाई चाहब से कौन हम से फोर्स अप्लाई कलापर से आकार रही। इफ यू वांट टू मेक ए पॉट बाय द हेल्प ऑफ ए क्ले, देन कौन हम तुम से क्लेटा कर सारापर तुम तापर जदि फोर्स रिमूव कर कौन से मटीटा थे पुणी थे मटी चिकटा हो जाए ना, से भाया क्ले गोटे पट हो रही जाए, पट हो रही जाए, ताले से कहगला से डिफर्म होगला ये। ताले ताको आम तापर फोर्स अप्लाई पर कौन है से डिफर्म होगला, ताले डिफर्म हो गला माने कौन है से भाया से रहीगला डिफर्म हो, से कहगला नॉन इलास्टिक बॉडी, जेहेतु से तार ओरिजिनल पोजीशन को आउथरे फेरिला नाही। तापरे हेडिंग रहा तुम रोचे रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स रो माने तो जानी पड़थो जो रिस्टोरिंग वर्ड अच्छी, रिस्टोर मीन्स कौन हम द प्रॉपर्टी बाय व्हिच इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। रिगेन करिवो रिस्टोर करिवो, रिस्टोर माने कौन हो से पुनरावृत्ति तार ओरिजिनल पोजीशन को फेरी आसीबो रिस्टोर करिवो से। ताले द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कैन बी इंटरप्रिटेटेड ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। ताले तुम कौच आम कहले रबर बैंडटा गोटे है इलास्टिक बॉडी, कहीं इलास्टिक है जेहेतु से तार ओरिजिनल पोजीशन को फेरी आसला एमती थिला, तापर आम फोर्स अप्लाई कलु पुणी आउथरे से फोर्स रिमूव कलापर पुणी ये भाया होगला। ताले ये भाया है केमती हेबापाई ताकू गोटे फोर्स हेल्प करिथिबो कि नहीं, ताले यही जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को आसीपाई जो फोर्सटा हेल्प कला ताकू ही कहगला तुम रिस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स व्हिच हेल्प टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड योर रिस्टोरिंग फोर्स। गॉट इट? देन नेक्स्ट हेडिंग इज योर डिफॉर्मिंग फोर्स। आम पूर्व डिस्कसन कर सारी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कहलु, जे कि थोड़े डिफॉर्म है परे आउ तार ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को फेरिला नहीं, सेमती रहीगला। ताले से जो सेमती रहीगला कहाँ पाई रहीगला, डिफॉर्मिंग फोर्स पाई। वंस डिफॉर्मिंग इट्स डिफॉर्म्ड, so the forces due to which the shape or size of the body tends to change called deforming forces. So we make a pot by the help of a clay. After removing the force, the pot is remaining a pot, neither converted to clay. So got it by the help of your deforming forces. Next heading is your stress. So it is very similar to the word pressure because the formula, dimension, unit all are equal or similar with the term pressure, because the formula also same with pressure, that is your force per unit area. So it is defined as the restoring forces per unit area or simply forces per unit area. Got it? So the unit of stress in SI, the unit of stress is your Newton per meter square. As you know, the unit of force is Newton and the unit of area is your meter square. So simply the unit of stress is your Newton per meter square. So in the CGS unit, the unit of stress is कौन हम ताले फोर्स रो यूनिट इन CGS रे कौन हुए, डाइन हुए, और एरिया रे कौन हुए सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन CGS इज योर डाइन पर cm square. Got it? Then dimension. The dimension of stress, we know that this dimension of force is your m1 l1 t to the power minus 2 and the dimension of area is l square. So if we convert the l square numerator to the denominator to the numerator, then it is converted to कौन ये भाया हो कि ना तुम हूँ
এইটি ଅଛି m1 l1 t to the power -2 ଅଛି, ତଳେ ଅଛି କ'ଣ l2 ଅଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଟାକୁ lଟାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା କେମିତି ହେବ, m1 l1 t -2 ରହିଲା, ତାହେଲେ lଟା ଉପରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, l to the power -2 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେବା। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ କ'ଣ ହେବ, m1 l to the power ଏଠି 1 -2 ମାନେ 1 -2 କେତେ ହେବ, 1 -2 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, -1 ହେଇଯିବ। তাহলে কেতে লিখিব m1 l -1 t to the power -2. So the dimensional formula of is your stress is m1 l -1 t to the power -2. So in the today's class we have discussed about the matter, the solid, liquid, gas, what is elasticity, what is elastic properties, what is restoring force, what is deforming force, and what is stress. So in next class we will discuss the type of stress and another topics. Thank you.